Hello everyone, welcome to Banking Short Selection. Friends, I am Shivam Sharma, previously was in IDBI, now working in Bank of Baroda. In this video, we will do daily GK update of 29 August 2020. If you want this PDF and also daily quizzes, get attached to my WhatsApp GA group. Link is in the pinned comment of video. Now let's start. Indian Railways set to meet its energy consumption of over 33 billion units by which year? So, according to Indian Railways, they will get energy consumption of over 33 billion unit by 2030. So, 33 billion unit energy consumption जो टारगेट रखा है रेलवे ने वो 2030 तक रखा है, 2030 तक। एंड पहले के भी दो टारगेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इंडियन रेलवेज जीरो कार्बन हो जाएगा 2030 तक एंड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज हो जाएगा 2023 तक। सो याद रखिए तीनों चीज़ों को। बिजनेसेस विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू 40 lakhs आर नाउ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। सो पहले ये 20 लाख लिमिट थी एंड अब ये जो लिमिट कर दी गई है बढ़ा के 40 लाख कर दी गई है। बिजनेसेस विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू 40 लाख अब वो एग्जेम्प्ट हो गए हैं GST से। एंड ऑल्सो दोज विद द टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ that is 1.5 करोड़ in हिंदी can opt for the composition scheme and pay only 1% टैक्स। सो जो भी मतलब टर्नओवर जिन भी कंपनीज का और बिजनेसेस का 1.5 करोड़ है वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और ओनली 1% टैक्स उन्हें देना होगा। Another news is related to ADB, Asian Development Bank. So ADB has given 900 crore 900 करोड़ दिए हैं ADB ने for skill university at Mangladoi, Darrang district in Assam. So just remember ADB 900 crore skill university at Assam, Mangladoi, Darrang district. Pratiksha, it is Kerala's first marine ambulance. So just remember Pratiksha, it is Kerala's marine ambulance. Irada campaign, it is launched by Jammu Kashmir government. So just remember administration of Jammu Kashmir has launched Irada campaign. Which department has decided to integrate electronic pension payment order with DigiLocker? So just remember to integrate electronic pension payment order, that is EPPO, with DigiLocker. It is Department of Pension and Pensioner Welfare. And most important thing is Bhavishya software was used to create the facility. So just remember both the news. Which country has launched India-backed infrastructure projects like Hull Humel Central Park and renovation of the Arrival Jetty recently? So it is Maldives. So just remember that Maldives has launched India-backed, that is India supported, इंडिया ने सपोर्ट किया है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। एक है हुल ह्यूमेल सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट एंड एक है रिनोवेशन ऑफ अराइवल जेटी इन मालदीव्स। अनदर न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू प्रधानमंत्री जनधन योजना। 6th एनिवर्सरी थी ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की। ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड 28 अगस्त 2020 को 6th एनिवर्सरी है इसकी। एंड अब इसमें कुछ डेटा निकल के आया है वो भी हम देख सकते हैं। ऑपरेटिव अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, जितने भी अकाउंट जो हैं वो ऑपरेटिव हैं, मतलब जो चल रहे हैं, उनकी परसेंटेज है 86.3%, 86.3%। टोटल अकाउंट्स अंडर PMJDY आर 40.35 करोड़, जस्ट रिमेंबर अप्रॉक्स 40 करोड़। रूरल प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट 63.6%, 63.6%। एंड वुमेन के जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट हैं वो हैं 55.2%, सो रिमेंबर अप्रॉक्स 55%। एंड टोटल डिपॉजिट जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
Total deposit 1.31 lakh crore up to now. So 1.31, that is 8.31 lakh crore. So remember this data, very crucial. Vinay M. Tonse is now MD of SBI Funds Management. Vinay M. Tonse, SBI Fund Management MD. Tharanga Pranavitana, he retired cricket. He was the player from Sri Lanka. Tharanga Pranavitana. DJ Bravo, that is Dwayne Bravo, he is West Indies cricketer. He is now first player to take 500 wickets in T20. So just remember DJ Bravo, that is Dwayne Bravo, West Indies first player, 500 wickets in T20. Bayern Munich. Bayern Munich is the team which has won UEFA, that is Union European Football Association Champions League 2020. So just remember Bayern Munich has won UEFA Champions League. Archana Mahanta died. She was Assamese folk singer. Just remember Archana Mahanta, she was Assamese folk singer. Justice A.R. Lakshmanan, he was former Supreme Court judge. Justice A.R. Lakshmanan. Now static from current. Dachigam National Park, Jammu Kashmir, Kiran Helpline. It is launched by Ministry of Social Justice and Empowerment. ASEAN 2020. It was in Vietnam and ASEAN headquarters in Jakarta. So this was the news for 29 September. If you like the content, please like the video and kindly share it with everyone. Thanks a lot.